everyone, in this video we are going to look at electric flux. ठीक है, electric flux सबसे पहले हम electric flux को एक diagram से we have to look into that. Alright, so for example consider an area. ये एक area है जिसके अंदर I have placed a patch and this patch is known as, इस patch को हम small element of area का नाम दे देते हैं. ठीक है, delta A and this round is A. ठीक है, जो कि A हमारे पास स्केलर है और ये जो स्मॉल वेक्टर एरिया जो है ये हमारे पास वेक्टर है. ठीक है, तो इनमें से द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्स आर पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया यहाँ से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, फोर्स ऑफ लाइंस पास हो रही हैं इस स्मॉल एरिया के अंदर से, तो वी आर गोइंग टू से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. लाइंस पास हो रही हैं फ्रॉम ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया के, दैट इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ स्केलर. ठीक है, तो दैट वी गोना से दैट दिस इज ए, ये क्या है हमारे पास, दिस इज अ फ्लक्स. अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं. राइट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ने लगे हैं. राइट, इसके बाद हम शुरू करते हैं कि या अब लाइक लेट्स जस्ट ड्राइव थ्रू मैथमेटिकली कि वी नो दैट Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू वेक्टर एरिया. ठीक है, ये हमारे पास QE is for the representation of the magnetic electric flux, and we know that E is equal to F upon Q into area. ठीक है, now if we wish to derive the formula that would, the unit, we know that the unit of force is Newton, charge का coulomb, and as this is a vector area so it would be meter square. ठीक है, so it can be asked from you that कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, दो मीटर थे, हम ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इज व्हाट. आप बता सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एल्स यू कैन राइट दैट न्यूटन मीटर, वी नो दैट न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल्स एंड अपॉन कूलम 1 जूल 1 कूलम मीटर इज इक्वल टू वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट का जो यूनिट होता है दैट इज जूल अपॉन कूलम. सो वी नो दैट हेयर जूल अपॉन कूलम इज ऑलरेडी हेयर, तो वी वुड से दैट वोल्ट मीटर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, वोल्ट मीटर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. राइट, इफ़ वी लुक इनटू द डायमेंशन ऑफ इट, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन की बात करें, तो इट वुड बी, वी नो दैट किलोग्राम मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास न्यूटन था, ये आई एम राइट, ये इतना हमारे पास न्यूटन आ गया, इतना. ठीक है, इतना हमारे पास न्यूटन आ गया. ठीक है, ये मीटर आ गया, मीटर स्क्वायर, एंड वी नो दैट कूलम की जो हमारे पास होता है दैट इज एम्पियर सेकेंड. ठीक है, सो लेट्स राइट द डायमेंशन ML3T -3A -1. This is the dimension of electric flux. Right, so electric flux is a dot product. Alright, it is a dot product. मैं बताती हूँ, it is a scalar
sorry, electric flux is a scalar, and we represent it with E is equal to delta upon Q2, and its unit is Newton meter square upon Coulomb, okay, over with area. Also, it is also known as volt meter, okay. So I'm gonna tell you a few more points that electric flux is dot product of electric intensity and a small element of area. ठीक है, it is a dot product of electric intensity and area. 5 से डिनोट करते हैं, चार्ज नहीं है, सॉरी मैंने पहले बोला था. So it is a scalar quantity and Newton meter square upon Coulomb is the formula of that. Alright, and अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की. ठीक है, सो थोड़े मैग्नीट्यूड की तरफ हम चल रहे हैं कि if the angle is 0, then the electric flux would be maximum. Alright, if the angle would be 90, so the electric flux would be, अब मैं लिख देती हूँ. ठीक है, angle 0, so it would be maximum. Angle 90, minimum, because we know that cos 90, जब भी डॉट प्रोडक्ट आ जाता है ना, तो we gonna place cos, and cos 90 is equal to, it's like 0, तो फिर minimum हो जाएगा. And if the angle is greater than 180, so it would be negative. ठीक है, and it would be like we are going to study about the quadrants as well. Alright, right. So if the angle would be, angle phi would be greater than 180, so the electric flux would be negative and it would be in the third quadrant. Okay, so if the phi is greater than 90, so the electric flux would be negative and it would be in the second quadrant. Okay, if the phi means electric flux would be greater than 0, so it would be positive. The flux would be positive and it would be in the first quadrant. Okay, if the phi would be less than 0, so the electric flux would be positive and it would be in the fourth quadrant. Okay, but if the electric flux is at the angle of 268, so the electric flux would be negative and it would be in the third quadrant. Okay, in the fourth quadrant, if we talk about, the electric flux is positive. Okay, so these were the few conditions that might come in MCQs. Alright, the dot product of electric intensity and small element of area is known as electric flux. Alright, I hope you got it, and thank you so much for watching.